Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series, and this will be the LRDI set number 65 from CAT 2018 paper. Now we'll look at the question. Okay. So the question says, an ATM dispenses exactly rupees 5,000 per withdrawal using 100, 200 and 500 rupees notes. The ATM requires every customer to give her preference for one of the three denominations of notes. It then dispenses notes such that the number of notes of the customer preferred denomination exceeds the total number of notes of other denomination dispensed to her. ठीक है, इसका मतलब क्या है? Let's say 5,000 rupees आएंगे total उसके पास, and we have three type of denominations: 100, 200 and 500. Let's say a customer said that her preference is 500 rupees notes. So that out of all the notes making that total amount of rupees 5,000, the number of 500 notes should be more than the sum of 100 and 200 notes. Okay. Similarly, if her preference is 200, the number of 200 notes should be more than the sum of 500 and 100 rupees notes, which make rupees 5,000. Okay. And similarly for 100 rupees as the preference. अब question क्या कह रहा है? In how many different ways can the ATM serve the customer who gives 500 rupees notes as her preference? ठीक है, अब 500 rupees अगर notes उसकी preference है, that means the number of 500 notes should exceed the number of 100 and 200 notes. तो एक तरीका क्या है कि सारे के सारे notes जो हैं वो 500 notes हों. That is, all the 10 notes are 500 notes. That means 500 into 10, it will get 5,000 rupees. So all are 500 rupee notes. This is one way. Other way would be that there can be 9 500 notes. That would make how much? 9 500 notes would make 4,500. The remaining 500 rupees, it can be made using what? Either 0 200 rupees notes and all the 5 as 100 rupees notes. One way is this. Still 9 would exceed 500 rupees notes. It can have one 200 rupee note and the remaining 3 100 rupees notes. If it has 1 200, it will make what? How much? 45 plus 200, 47 plus 3 300 notes, which is 5,000. So this is the third way. And the other way is 2 200 notes and 1 100 rupee note. This is the fourth way. It cannot have more than 2 200 rupees notes, so it cannot go to 3 200 rupees notes, because that will make 600 rupees and we need only 500 more. So this is the fourth way. Now there can be 8 500 rupee notes. That will add up to how much? 4,000. Now remaining 1,000 we have to make up with 100 rupees notes and 200 rupees notes. Can it have 0 200 rupees notes and the remaining 10 100 rupee notes? No, because her preference is 500, and this way we are getting 10 100 ka notes and 8 500 ka notes, which cannot be possible because the number of 500 notes should be more than the other denomination ki notes. So this way is not possible. Can it have 1 200 ka and remaining 8 100 ka? Again, not possible because this will add up to 9 more than 8. Can it have 2 200 का and remaining कितना बच जाएगा? 6 100 का? No, because again it added to 8, which is equal to the 500 rupee notes, but 500 rupees notes have to be more than the sum of 100 and 200 rupee notes. So ये भी नहीं हो सकता. So minimum 3 चाहिए उसको 200 रुपए के नोट.
अगर 3 200 रुपये के नोट हो गए और 4 100 के हो गए, ये एक केस हो जाएगा। फिफ्थ, एक हो जाएगा 4 100 रुपये के नोट, 4 200 रुपये के नोट है, 2 100 के नोट है, सिक्स्थ केस। एंड लास्ट केस क्या होगा? सारे के सारे पांचों के पांचों 200 के नोट है एंड 0 100 रुपये के नोट है। सो सेवेंथ केस ये हो गया। Now, can we reduce the number of 500 rupee notes from 8 to 7? Let's say we reduce it to 7. So that will add up to how much? 3500 rupees. तो बचे हुए 1500 रुपए उनको आ रहे हैं 100 और 200 रुपए के नोट से. So even if we include the minimum number of notes, minimum number of notes कब आएंगे? जब maximum 200 के notes हो. क्योंकि अगर maximum 100 रुपए के नोट हो तो फिर तो 15 notes आ जाएंगे. हमें मिनिमम करना है नंबर ऑफ नोट्स टू मेक 1500 यूजिंग 100 and 200 रुपी नोट्स. सो वी हैव टू maximize the number of 200 rupee notes. So even if we are maximizing the number of 200 rupees notes, it will be 7 200 rupees notes plus 100 rupee note. तब जाके 1500 बनेगा, which is already more than 7. Even if we are minimizing the count, it is still more than 7. So we cannot reduce the number of 500 rupee notes below 8. So total number of cases कितने आ गए? एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7. So in how many different ways can ATM dispense 500 rupees notes as a preference? 7. इसका आंसर है 7. ठीक है. Now coming to the second question. If the ATM could serve 10 customers with the stock of 50 500 rupee notes and a sufficient number of notes of other denominations, what is the maximum number of customers among these 10 who could have a preference of 500 rupee notes? ठीक है. तो ये कह रहा है कि if the ATM could serve only 10 customers with a stock of 500 rupee notes, 50 500 rupee notes, तो इसका मतलब है कि जो एटीएम है उसके पास 50 500 रुपीज के नोट्स हैं, 50 नोट्स ऑफ 500 रुपीज. ठीक है. एंड अ सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन, मतलब 100 and 200 के देयर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स. Then what is the maximum number of customers among those 10 customers who could have 500 rupees notes as their preference? We just saw in the last question that if someone has a 500 rupees notes as their preference, the minimum number of 500 rupee notes he can get is 8. 8 से कम वो 500 रुपी के नोट नहीं ले सकता है अगर उसने 500 रुपीज नोट एज अ प्रेफरेंस डाली है. 7 पे 500 का 7 नहीं हो सकता है. इट हैज टू बी मिनिमम 8. एंड इफ द एटीएम हैज 50 500 के नोट्स, so the maximum number of customers it can serve with 500 rupees notes as their preference is कितना? 50 divided by 8, क्योंकि मिनिमम 8 तो चाहिए चाहिए एक बंदे को अगर उसकी 500 रुपी नोट्स की प्रेफरेंस है. So which is how much? This is more than, this is how much? 6 point something, 6.2 something. So at max, it can serve 6 customers with 50 rupees का stock. 50 notes का अगर stock है उसके पास 500 rupees का. So at max, it will serve 6 customers जिनकी preference क्या है? 500 rupee notes की. ठीक है. 50 divided by 8 से उसका आंसर निकल रहा है. ठीक है. Now coming to the next question, it says, what is the maximum number of customers that the ATM can serve with a stock of 50 500 rupees notes? Again, it has 50 500 rupees ka notes and a sufficient number of other denominations if all the customers are to be served with at most 20 notes per withdrawal. ठीक है. At most 20 notes per withdrawal होने चाहिए. तो अगर let's say total 5000 जो नोट रुपीज अमाउंट विड्रॉ हो रही है, अगर all of them are being disposed in a denomination of 100 rupees, तो कितने नोट्स आएंगे? 5000 divided by 100. So total 50 100 rupee notes are required to get a sum of 5000. Similarly, if we divide it by 200, it will be 25. So 25 notes are required of 200 rupee notes
to make a sum of 5,000. But we have a limit that the at most 20 notes per withdrawal होने चाहिए, उससे ज़्यादा notes एक withdrawal के अंदर नहीं होने चाहिए. So to make this happen, we need to include 500 रुपये के notes. क्योंकि अगर हम 5,000 को 500 से डिवाइड करें तो 10 आ रहा है. मिनिमम 10 notes are required, which is under the limit. But अगर हम सिर्फ 100 और सिर्फ 200 के भरोसे चले, we won't meet this limit. So we need to include a mixture of 500 का note to so that the maximum number of notes can be below 20 or 20. But we have another limit, which is what, कि हमारे पास 500 के notes सिर्फ कितने हैं, 50. ठीक है. तो हम इन दो लिमिट्स के साथ कि नोट्स 20 से कम होने चाहिए, 20 या उससे कम होने चाहिए, एंड हमारे पास 50 नोट्स है 500 के. तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स वी कैन सर्व. अगर हमारे पास लिमिट किस पे है, 500 रुपये के नोट्स पे, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी यूटिलाइज as less of 500 rupee notes as possible. ठीक है. उसके लिए क्या होगा, लेट्स से वी यूज वन नोट ऑफ 500 पर कस्टमर, तो बचा हुआ 4500, बचा उसके पास 4500 बचा. उस केस में even if he all this 4500 is uh, dispensed in form of 200 rupee notes, he'll still require 22 plus एक 100 का note to make 4500, which is again more than 20 notes per withdrawal. So एक से तो ज्यादा चाहिए 500. लेट्स से हमने दो 500 के ले लिए, तो 1000 रुपीज हमें 500 से आ गया. बचा हुआ 4000 रुपीज. इवन इफ वी डिस्पोज 200 रुपीज के नोट्स, इट विल स्टिल रिक्वायर 220 नोट्स. 4000 डिवाइडेड बाय 200, स्टिल 20 नोट्स तो यही हो गए 200 वाले. सो अगेन वी नीड अनदर 500 का नोट. लेट्स से 1500 हमने 500 से ले लिए, 500 के नोट से बचा 3500. द मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड टू मेक दिस 3500 इज, अगर हम 200 से डिवाइड करें, सो 17 200 का नोट प्लस एक 100 का नोट 18 प्लस 3 5000 के नोट 21. अगेन इट इज एक्सीडिंग द 20 विड्रॉल का पर लिमिट. तो वी नीड वन मोर 500 का नोट. तीन 500 के नोट से भी वो लिमिट मीट नहीं हो रही है. लेट्स से अब हमारे पास है चार 500 के नोट. विथ फोर 500 का नोट्स वी हैव 2000 रुपीज. बचा हुआ 3000 रुपीज. इफ यू डिवाइडेड, लेट्स से ऑल सारे के सारे जो 2000 रुपीज, जो 3000 रुपीज है वो 200 के नोट से आ गए. टू मेक द नोट काउंट मिनिमम विल रिक्वायर 15 मोर नोट्स प्लस ये चार 500 के नोट्स. so total notes would be 19, which is under the 20 limit, 20 नोट का लिमिट. सो मिनिमम हमें 2000 बनाना पड़ेगा 500 के नोट से. दैट इज हमें मिनिमम चार 500 के नोट्स तो चाहिए होंगे पर कस्टमर, so that the total number of notes is less than 20 or equal to 20. और हमारे पास टोटल 500 के नोट्स कितने हैं, 50. so the maximum number of customers we can serve is how much, 50 divided by 4, which is how much, 12.5. यानी we can serve 12 customers, because आधा कस्टमर तो हम सर्व नहीं कर सकते हैं. we'll take the lower limit, which is how much, we can serve 12 customers. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा C. Now coming on to the next question. Next question says, what is the number of 500 rupee notes required to serve 50 customers with 500 rupee notes as their preference and another 50 customers with 100 rupee notes as their preference, if the total number of notes to be dispensed is the smallest possible. ठीक है. तो हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स टू बी डिस्पेंस्ड स्मॉलेस्ट रखना है. तो 50 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी 500 रुपीज की प्रेफरेंस है, और अनदर 50 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी 100 रुपीज की प्रेफरेंस है. If we need to keep the total number of notes dispensed as smallest as possible, then we have to dispense the notes with the highest denomination as much as possible. 500 के नोट्स जितने ज्यादा हैं उतने कम नोट्स डिस्पेंस होंगे.
क्योंकि टोटल सम हमें 5000 बनाना है। तो जिनकी प्रेफरेंस 500 है, लेट अस उनको तो हम कह सकते हैं कि उनको सारे के सारे 500 दे दो। तो अगर उनको 10 के 10 500 दे दो, उनके 5000 बन जाएंगे। सो ऑल ऑफ देम शुड बी 500 and per customer there would be 10 500k notes to make 5000 rupees. So 50 customers के लिए how there would be how many 500 notes. So 500 नोट तो यहाँ से आ गए जिनकी प्रेफरेंस है 500 की, कि उनको सारे के सारे हमने 500 के नोट दे दिए 10 to keep the number of dispensed notes minimum. So they would need 50 into 10 which is 500 notes of 500. हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स। तो 500 तो यही हो गए जिनकी प्रेफरेंस 500 है। अब उन लोगों की बात करें जिनकी प्रेफरेंस 100 है, वी हैव टू कीप द सम द 500 रुपीज मैक्सिमम। अब 10 के 10 500 तो नहीं दे सकते उनको, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस 100 की है। अगर 10 के 10 500 दे दिए तो उनकी प्रेफरेंस का मतलब ही नहीं रहा। लेट्स से उनको 9 500 के दिए विच मेक्स 4500। तो बचे हुए उनको मैक्सिमम हम 100 के कितने दे सकते हैं, 5, विच विल बी लेस देन 9। तो हमें 9 से भी कम उनको 500 देना पड़ेगा। लेट्स से हमने उनको 8 500 के नोट दिए, 8 500 के नोट दिए, बचे हुए कितना हो गया उनका सम 4000 हो गया। बचे हुए 10 उनको हमने 100 के नोट दे दिए टू मेक 5000 रुपीज। सो इस केस में क्राइटेरिया उनका मीट हो रहा है। द नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स विच इज 10 एंड नंबर ऑफ नोट्स डिस्पेंस स्मॉलेस्ट पॉसिबल भी हो गया, क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ 500 रुपीज नोट्स इंक्लूड किए हैं विच इज 8। सो इस केस में पर कस्टमर 8 500 रुपी के नोट्स डिस्पेंस होंगे। टोटल 50 कस्टमर हैं, तो कितने नोट्स डिस्पेंस होंगे, 50 इंटू 8 विच इज हाउ मच 400। सो इधर 400 500 रुपी के नोट्स यूज हो रहे हैं और इधर 500 रुपीज के नोट्स हो रहे हैं यूज। सो टोटल नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, 500 प्लस 400 विच इज हाउ मच 900 नोट्स एटलीस्ट लगेंगे 500 रुपी नोट्स के, 500 रुपीज नोट्स के, टू मेक दिस क्राइटेरिया पॉसिबल टू सर्व दीज 100 कस्टमर्स 50 एंड 50। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी, विच इज हाउ मच 900 रुपी नोट्स, 900 900 500 रुपी नोट्स। ठीक है। सो आई होप this set was clear to every one of you. For any further queries, you can reach out to us on the following number or you can reach out to us on WhatsApp or the given email ID. Thank you.